So, dear ladies and gentlemen, it's been a long day, but कहते हैं कि सबसे खास बातें, खास sessions आखिर के लिए बचा के रखते हैं. This session, probably the last session for the day 2 of Bhopal Literature and Art Festival, is titled as BIMSTEC Knowledge Session, Vasudhaiva Kutumbakam, the traditions of community in Bay of Bengal region. And we will be in conversation with Mr. Haroon, Habib, Kitso Pelmo, Rakesh Kumar Tiwari, Ritupriya Khare and Ambreen Zaidi. मैं चाहूँगा जोरदार तालियों से हम उन सभी का स्वागत करें और मैं चाहूँगा कि मैं आपको बारी बारी से इन सभी हस्तियों के बारे में अवगत करूँ, इनके बारे में बताऊँ. Haroon Habib ji from has come all the way from Bangladesh, is a recipient of several national recognitions including the prestigious Bangla Academy Literary Award. He is a veteran of Bangladesh's Liberation War of 1971. A committed writer and an authority in the field of liberation and research, Mr. Habib has authored more than 50 books, short stories, novels, essays, poetries, and research works, etc. Also, a senior journalist and columnist, Mr. Habib led the country's national news agency Bangladesh Sangbad Sansthan, as the chief editor and managing director, and also worked as the Dhaka correspondent of leading Indian newspaper The Hindu and Frontline magazine for nearly 3 decades. मेरे ख्याल से इस experience के लिए तालियां होनी चाहिए. About Kisto Pelmo, she is the producer of Bhutan Echoes, has been invited by the Ministry of External Affairs to the BIMSTEC association with the BLF, and it would interest some of you to know that her name Kitso means a peaceful lake. Irony being she is in the city of peaceful lakes. We welcome you, Kitso. Zordar taali honi chahiye. A round of applause for Kitso. Moving on, our next discussant for the day is Rakesh Kumar Tiwari ji. Tiwari ji has taken over as the Under Secretary of BIMSTEC at the Ministry of External Affairs, India from December 2020. He is a career diplomat and belongs to the Indian Foreign Service batch of 2017. He has also served for 2+ years at Indian Embassy in Myanmar, where he learned the Burmese language and passed the Burmese language proficiency exam with a distinction. He has 16+ years of experience working in various fields. He speaks English, Hindi, Gujarati and Burmese. उनके लिए भी तालियां होनी चाहिए. Next, we have with us Ritupriya Khare ji. She is a poet, author, singer and a composer. She holds an MSc in chemistry and she has been trained in classical and folk music. Her publications include Kargil Vikas Parakram, yes, of course, Jai Jai Garvi Gujarat, released by the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, and Vikas Ki Ganga, which was released by Honorable Minister Nitin Gadkari ji. Next, as the moderator, we are elated to have Ambreen Zaidi ji with us. Zordar taaliyan unke liye. She has been a well-known columnist and author. Her debut book, The Warrior Widows, was a tribute to the wives of the soldiers of the armed forces who are engaged in defending the country from internal and external threats. She has been associated with BLF since quite a long time and we are really happy to have her once again as the moderator. मैं चाहूँगा कि जोरदार तालियों के साथ हम सब इस आखिरी और बेहद इंटरेस्टिंग सेशन की शुरुआत करें. Over to yes. Take a lead. Sure. Working. Okay. Yeah, I'll do that. Jai Hind everyone. और वासुदेव कुटुंबकम, हम सबको इसका मतलब मालूम है. वन वर्ल्ड वन फैमिली, दैट इज़ व्हाट इंडिया स्टैंड्स फॉर. और सबसे पहले मैं कित्सो को इनवाइट करूंगी टू इंट्रोड्यूस हर सेल्फ. शी इज़ फ्रॉम बर्मा एंड वी आर इंडीड वन बिग Bhutan, and we are indeed one big family. Thank you. Thank you.
Good evening, everyone. So unfortunately, I will not be a part of this panel session as I feel like I don't know enough on the subject matter. But I'd like to take this opportunity to share a little bit about Bhutan Echoes, the organization that I work for. So we were formerly known as the Mountain Echoes. It is Bhutan's very first literature festival. And Bhutan Echoes is a decade-old celebration of stories, cultural, and literature exchanges engagements. It was founded by Her Majesty, the Queen Mother Kyalyum Aji Doji Wamo Wangchuk in 2010 as the Indo-Bhutan initiative. We're also very grateful to the Indo-Bhutan Foundation and the Indian Embassy for your unwavering trust and support, which made it very possible to successfully organize all our past festivals. My gratitude also extends to the Bhopal Literature and Art Festival family for organizing this marvelous festival, your kind hospitality, and for having me here. And lastly, I'm thrilled to announce that we will be organizing our next festival this August from the 4th to the 6th. So please do join us in Bhutan. Thank you. Thank you so much, Kitso. And ladies and gentlemen, first of all, I'll start with Haroon Habib ji. Haroon Habib ji has been a key player, and he has been at the forefront as a veteran fighter in the 1971 war, which is a big, big achievement. And I would like to tell let him tell himself what made him go to the war front, first as a veteran, then as a photojournalist, then as an author, and all that followed. Thank you very much. Actually, I was a student in Dhaka University when the turmoil, anti-Pakistani turmoil by the Bengalis were in the offing. And naturally, actually, during the Pakistani's 24 years time, there's the main problem with the Pakistani rulers and the ruling coteries was that they wanted Bengalis speaking people to be Muslims only, not the human being, not the Bengali own identity. And that is the crisis. Actually, what happened, Bengali people have their own identity of secular identity. Those who are Bengali, they are Hindus, Muslims, and other religion people also. But that particularly thing influenced our generation, and therefore, and of course, there was this very effective leadership of Sheikh Mujibur Rahman, as you all know. So we just rose up. And in the 1970, there was you won't imagine, during the 24 years of United Pakistan, there was not a single election except the 1970 election, and in which the major party of Sheikh Mujibur Rahman won. But the military rulers wouldn't succumb, they would not let the Bengali to lead Pakistan. Therefore, the crisis was there. And finally, on 25th March of 1971, they suddenly started a massacre in Dhaka, killing the Bengali people. And that very night, independence was declared by Sheikh Mujibur Rahman, and then followed by his arrest, and he was taken to West Pakistan. So, for your answering your question, I should say this is the story not of me, it is a story of other hundreds of thousands of young people at that time who decided to take up arms to fight against the Pakistani military rulers. Oh, okay. But recently you mentioned that genocide in Bangladesh has never been acknowledged by the world. Why do you say so? Actually, what happened, it is a great failure of the United Nations that now it is 51 years Bangladesh genocide was banned. And Bangladesh genocide was the 5th largest genocide in the world in the 20th century.
And United Nations did recognize the Armenian genocide, recognized even the very recent Bosnian, Rwandan genocide, Cambodian genocide, but not the Bangladesh one. Why? Actually, if we go through the history of Bangladesh independence war, in which the India was the integral part of that particular war, and the role of India is written in blood, because not only the Bengalis freedom fighters who fought against the Pakistani army died and butchered, got killed, but for independence of Bangladesh, it's unique. A foreign nation, Indian nationals, thousands of Indian national soldiers also died for the Bangladesh cause. So what I was talking about the genocide, Bangladesh war, it happened in the backdrop of Cold War at that time, Soviet Union and America. While United States did support Pakistan, Soviet Union via India supported the Bengali cause. Therefore, there was a problem with the United Nations. Even today, that problem persists. Very recently, in the United Nations, in the US Congress, one Democratic and Republic MP placed forward a joint resolution so that Bangladesh resolution could be done. I, on behalf of Bangladesh people, and using this platform to appeal to the United Nations that for his own sake, respect, for his own sake of judgment, this brutal genocide which Bangladesh had encountered in 1971 in the hands of Pakistani marauding army must not be go unnoticed, at least in the official document of United Nations. Thank you so much. And taking forward, I will come to Rakesh ji. Since you work in the region through BIMSTEC, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, वासुदेव कुटुंबकम जो हमारे सेशन का नाम है, तो इसका कुछ रोल है हमारी फॉरेन पॉलिसी में? Does it play a key role in our foreign policy also? Thank you, ma'am. हमारे यहाँ एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, अयम निजम परो वेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये भारतीय सोसाइटी की, इंडियन कल्चर की ये सबसे टॉप मोस्ट वैल्यू है कि हमारे लिए संपूर्ण पृथ्वी ही परिवार है। हमारी संसद के इंट्रेंस पर ये लिखा हुआ है, ये सूक्त लिखा गया है, और ये भारतीय परंपरा है कि हम संपूर्ण पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है, तो यह सिर्फ हमारी फॉरेन पॉलिसी को, डिप्लोमेसी को ही नहीं प्रभावित कर रहा है, बल्कि ये तो हमारा संपूर्ण कल्चर है, हमारा संपूर्ण संस्कृति है। उसके अनुसार हमारी जो डिप्लोमेसी है वह भी उसी हिसाब से कार्य कर रही है। अभी जो G20 की प्रेसिडेंसी भारत को मिली है, जो इसके लिए भी यही थीम वाक्य रखा गया है। इसका मतलब कि एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। और यदि हम वर्तमान में देखेंगे, अगर हम शायद इसी संकल्पना पर चलेंगे तो संभवतः विश्व में एक समृद्धि और शांति होगी। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि हाउ डू यू सी द सिग्निफिकेंस ऑफ BIMSTEC in India becoming a superpower? India is becoming superpower in many aspects, not only by the BIMSTEC only. And BIMSTEC, as you know, that is the organization, intergovernmental organization among Bay of Bengal region. Bay of Bengal, if you can say, most of the neighboring countries we have. So, BIMSTEC is a unique organization that is connecting Southeast Asia and South Asia. Southeast Asia, we have two countries, Myanmar
and Thailand. In Southeast Asia, we have India, Nepal, Bangladesh, Bhutan, Sri Lanka. So these connectivity and also in this region, by this combination of these countries, we have around 22% around population of the world. Recently, around 8 billion population that has crossed in last November, 15 November. So in that case, we have a population of the around 23% of the world, as well as around $4.4 trillion GDP. Combinedly with BIMSTEC region. So if we cross-border movement and we open our border and trade and we utilize all the available opportunities, then definitely it will help to become India as a superpower, as Vishwaguru. Because we have immense potential in this region. Also we have Northeast. Absolutely, yes. Please continue. Okay, yeah. Also, if you say there is a Northeast, our state, so there is, if we open the border, cross border with Bangladesh, with Myanmar, and up to Thailand, and reaching up to Southeast Asia, it will create immense opportunities for India, and this will definitely create a growing environment in Bay of Bengal region. Oh, wow. That gives out a very positive message. And now I move on to our lady here, Mrs. Ritupriya Khare, और इन्होंने एक किताब लिखी है विजय विश्व तिरंगा हमारा, which has poems from people from 45 countries, Indians in 45 countries. इससे प्यारा मैसेज वसुदेव कुटुंबकम का कोई और नहीं हो सकता है. मैम, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए. Thank you so much. Thank you, Mr. Raghav Chandra, for inviting me over for this beautiful session. Please show your book also to the audience. Surely. So this is my book. It's a coffee table book है, हिंदी गीत, कविताओं और संस्मरण पेंटिंग्स की. विश्व के 5 कॉन्टिनेंट्स और 45 से अधिक देशों के करीब 75 इसमें कलाकार हैं, साहित्यकार हैं, कवि हैं, डिप्लोमैट्स हैं, राजनयिक हैं. और भारत की आज़ादी के अमृत महोत्सव के शुभ उपलक्ष्य में यह पुस्तक हमने और हमारे साथ कैलिफोर्निया की प्रोफेसर नीलू गुप्ता, उनकी संस्था है उत्तर प्रदेश मंडल ऑफ अमेरिका, और हमारी संस्था है त्रिवेणी अंतर्राष्ट्रीय संस्था. तो हम दोनों ने मिलकर प्लान किया कि क्यों ना इस अमृत महोत्सव को अमृत काल की ओर ले चलें और भारतवंशी जो विश्व में अनेक स्थानों पर रह रहे हैं, जो साहित्यिक गतिविधियों में संलग्न हैं, अनेक डिप्लोमैट्स, अनेक राजनयिक, भारत से अनेक लोग, तो हम सब इस पुस्तक का निर्माण करने में एक अभूतपूर्व भूमिका निभाई है मिलकर. मैं गौरवान्वित हूँ कि इस पुस्तक का विमोचन सर्वप्रथम कैलिफोर्निया में 15 अगस्त को किया गया, वहाँ के मेयर द्वारा. और सिंस इसमें 45 देशों के लोग शामिल हैं, तो अनेक देशों में अनेक स्थानों पर इस पुस्तक का हम विमोचन कर रहे हैं. इसमें एक प्यारे प्यारे संस्मरण हैं, गीत हैं, कविताएं हैं, और सभी राष्ट्र प्रेम और महात्मा गांधी से संबंधित है. यह पुस्तक के निर्माण में मैं बताना चाहूँगी कि कोविड काल में जब मैं कोविड से ग्रसित थी, हॉस्पिटल बेड पे थी, तब यह विचार आया कि क्यों ना यह समय कुछ पॉजिटिव क्रिएट किया जाए. तो ये पुस्तक का थॉट आया. मैंने बात की प्रोफेसर नीलू गुप्ता कैलिफोर्निया से, और उन्होंने तुरंत सपोर्ट किया, और धीरे धीरे हम लोग कनेक्ट होते गए विश्व भर में. ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हाथ में तिरंगा थामे डिजिटल पटल पे हम पूरे विश्व की यात्रा कर रहे हैं. और जैसा कि इस सेशन का टॉपिक है वसुधैव कुटुंबकम, तो इससे प्यारा क्या हो सकता था कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, जो हमारा तिरंगा है वो राष्ट्र का ईश्वर है, और इसके तले हम सब एकत्र होते चले गए
और इस पुस्तक का निर्माण किया। बहुत खूब, और आपकी किताब भी बहुत खूबसूरत है, मैंने कुछ अंश पढ़े हैं इसके। हारून हबीब जी, आपका एक बहुत बड़ा रोल है इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस में, एंड विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द सब कॉन्टिनेंट ऑल्सो। उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? Thank you. Actually, just only 1 year ago, Bangladesh and India celebrated the 50 years of diplomatic relations. Actually, that relations is not only a mere official diplomatic. What I think personally, as a foot soldier of 1971 war, that particular relations between India and Bangladesh was bonded with blood, because for our independence, Indian soldiers died. For our independence, over 10 million, estimated 10 million people who were just fled away from the former East Pakistan were just given refuge in West Bengal, Tripura, Assam and Meghalaya. For our independence, the then government under Indira Gandhi played a heroic diplomatic role all over the world, even going against America, United States and China. And interestingly, at that time, Pakistan was a friend of China, and although China and India, China and America was enemy, but they were trying to jointly, foil the Bangladesh independence. Therefore, what I see, that linguistically, ethnically, and traditionally, historically, India and Bangladesh are friends. And Mr. Tiwari was talking about BIMSTEC. What is that? It is an initiative so that we don't live individually but collectively. And India and Bangladesh's relations is a special significance because of 1971, because it is the national anthem of India, and Bangladesh national anthem is written by Rabindranath Tagore. So there are cultural links, there are historical links, among more so there is 1971. So what I have written lot of books on India-Bangladesh relations. Particularly one book is India in Bangladesh Liberation War. It's a 3-volume book where I analyze the facts and documents of 1971 and all that. Okay. Very true to the spirit of Vasudhaiva Kutumbakam. तिवारी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं तो फिर मैं आपसे पूछूं। आप बताइए किस बारे में? मैं आप ही के बारे में पूछूंगी, बिम्स्टेक के बारे में पूछूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि यू हैव स्टडीड लॉ, यू हैव स्टडीड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यू हैव स्टडीड साइंस, एंड नाउ यू आर इन इंडियन फॉरेन सर्विस. सो व्हाट मेड यू चूज इंडियन फॉरेन सर्विस? इट इज़ दैट लाइफ जर्नी कि सबसे पहले मैंने जो पढ़ाई की तो कैंपस सिलेक्शन हो गया. तो कैंपस सिलेक्शन के बाद फिर मैं 5-6 इयर्स मैंने जॉब की और कुछ बाहर के देशों में चला गया. उसके बाद फिर यू मेंशन अबाउट दैट साइंस, लॉ एंड सो मेनी थिंग्स. सो in that case, I left my job and went for UPSC preparation. So I prepared for 1 year and I got selected, and in my first attempt I got Indian Revenue Services, IRS. So for that IRS, that is part of my training. That is the you go through law and everything. That is for that is our training part. And after that, next attempt I got my dream job, that foreign service. So this is the all the life journey. So it is not in my hand. It's as situation give you have to accept that. Life, that what you call it. अच्छा, मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक कल्चरल लिंकेज है जो बिम्स्टेक और वासुदेव कुटुंबकम के थ्रू हम लोग के साथ जुड़ी हुई है विद ऑल द कंट्रीज़.
तो उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ऑल ऑफ अस आर टुगेदर, वी आर वन फैमिली, वर्ल्ड इज़ वन बिग फैमिली. तो वो और बिम्स्टेक, मतलब हाउ आर यू ऑल रिलेटेड एंड हाउ डू यू टेक दिस फॉरवर्ड? यू मीन कि बिम्स्टेक को कैसे ऑपरेट किया जाता है इस तरह से? कल्चरली हम लोग तो ऑलमोस्ट सब कॉन्टिनेंट में सब कुछ जुड़ा हुआ है ना? कल्चर्स हमारे जी, जी. काफ़ी कॉमन जी, है, जी. हर चीज़ उसके हिसाब से. जी जी. मोस्टली जैसा आपने पूछा, जो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, मल्टीलेटरल कोऑपरेशन, टेक्निकल, मोस्टली टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इसके नाम में है. तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड, ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन किया जाए, ये इसका उद्देश्य है. तो मोस्टली बिम्स्टेक कैसे कार्य करता है? जैसे ये मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कुल 7 कंट्री हैं, 7 कंट्रीज हैं. तो 7 कंट्रीज में 7 एरियाज ऑफ कोऑपरेशन हैं, 7 पिलर्स हैं, और एवरी पिलर इज़ लेड बाय ए कंट्री. 7 कंट्री हैं, 7 पिलर्स हैं. तो जैसे इंडिया इज़ द लीडर ऑफ सिक्योरिटी सेक्टर. सिक्योरिटी सेक्टर में उसमें कुछ सब ग्रुप्स हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट, काउंटर टेररिज्म और एनर्जी सिक्योरिटी. सेकेंड पे बांग्लादेश में ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट. नाउ डेज बांग्लादेश डूइंग वेरी वेल इन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ, एंड वी कैन सी देयर GDP एंड एवरीथिंग दैट इमेंसली दे आर डूइंग वेरी वेल. बांग्लादेश. इसके बाद भूटान इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो इश्यू है, भूटान उसको लीड करेगा. म्यांमार में एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी मैटर है. इस श्रीलंका में जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इससे रिलेटेड चीज़ें वो लीड करेगा. और थाईलैंड से कनेक्टिविटी, जो कनेक्टिविटी का सेक्टर्स है. एंड नेपाल टूरिज़्म, पीपल टू पीपल कांटेक्ट, कल्चर, ये सब देखेगा. तो एज यू आस्क कि वी हैव सिमिलर रूट इन साउथ ईस्ट एशिया. आवर कल्चरल सिमिलरिटी वी हैव, इफ वी से दैट कि अस्तोमा सदगमय, दैट यू कैन से दिस इज फ्रॉम इंडिया. या दैट इज ऑल्सो फ्रॉम इंडिया, बट इज द नेपाल राष्ट्र बैंक का मोटो है. या विद्यैव सर्वधनम, दैट ये इंडिया का नहीं है, ये श्रीलंका की किसी मोटोपुरा यूनिवर्सिटी का मोटो है. इवन आप पूरे साउथ ईस्ट एशिया में या इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में देखेंगे, हमारा कल्चर सेम है. इवन हम म्यांमार में, आई वॉज पोस्टेड इन म्यांमार, तो म्यांमार में आप जाएंगे, यहाँ पे जो हम पढ़ते हैं या जानते हैं और म्यांमार में क्या होता है वो पूरा डिफरेंट है. वहाँ पे बुद्ध को कैसे माना जाता है, वहाँ पे 8वीं या 10वीं शताब्दी का आपको एक बगान करके एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है, जहाँ विष्णु भगवान का मंदिर है. और वहाँ पहले कैसे क्या सिस्टम था, या कहने का ये मतलब है कि हेरिटेज या जो कल्चरल कनेक्शन है, दैट इज़ टू मच सिमिलर इन ऑल साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जो हमारा हिस्ट्री था. सो दिस इज द वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ बिम्स्टेक. ओके, थैंक यू सो मच. रितु मैम, ये बताइए कि ये बुक का आइडिया जो आपके पास आया व्हेन यू वर सफरिंग विद कोविड, तो आपने कैसे ये 45 पोएट्स फ्रॉम 45 कंट्रीज़, इनको साथ में कैसे पिरोया? आप कैसे साथ में लाती गई? व्हाट वाज द बाइंडिंग फोर्स? बाइंडिंग फोर्स वाज देश प्रेम और तिरंगा. तिरंगा जो है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि राष्ट्र का ईश्वर है, और इस तिरंगे के अंतर्गत हम सब जुड़ते चले गए. दैट नीड्स अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज एवरीवन. तो मैं आपको एक छोटा सा गीत सुनाती हूँ, जी. जो तिरंगे पे ही है, इस पुस्तक में लिखा हुआ है. हर घर तिरंगा. और आज मेरे सामने ज्योति पांडे जी बैठी हैं, जिनका भी इस पुस्तक में बहुत सुंदर कविताएं हैं. गिव हर अ ह्यूज हैंड ऑफ अप्लॉज. इनकी बहुत सुंदर कविता है. कर्नल पांडे बैठे हुए हैं और दोनों आर्मी से संबंधित हैं, और बहुत खूबसूरत आपने कविता भेजी है. आइए गीत सुनते हैं. लहर लहर लहराता है, गीत खुशी के गाता है, माँ भारती हाथों में तिरंगा लहराता है. लहर लहर लहराता है, गीत खुशी के गाता है, माँ भारती हाथों में तिरंगा लहराता है. आज़ादी अमृत महोत्सव अमृत रस बरसाता है, देश के कण कण में बसता जन जन को हरसाता है.
विजयी विश्व तिरंगा प्यारा लहर लहर लहराता है, भारत की गौरव गाथा विश्व को सुनाता है। राष्ट्र का ये ईश्वर है, हर जन को यह भाता है, देश प्रेम और वीरता का संदेशा दे जाता है। हर घर आज तिरंगा फहरे, घर की शान बढ़ाता है, केसरिया श्वेत हरा रंग हर मन को यह भाता है। विश्व कुटुंब बने और पनपे, देश का मान बढ़ाता है, शांति अहिंसा और प्रेम का संदेशा दे जाता है। लहर लहर लहराता है, गीत खुशी के गाता है, माँ भारती हाथों में तिरंगा लहराता है, तिरंगा लहराता है, तिरंगा लहराता है। जय हिंद। That is तो so इस beautiful. जर्नी में मुझे देखिए डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप बहुत से हेल्प मिली, और चूँकि एक डिजिटल पटल पे जर्नी थी तो मेरा कनेक्ट हुआ जेनेवा में भारत के यूनाइटेड नेशन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं एम्बेसडर श्री इंद्रमणि पांडे जी से। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत महात्मा गांधी पे एक आर्टिकल भेजा है इस पुस्तक पे, और उन्होंने मुझे पिछले साल इनवाइट भी किया था कि यूएन में इसका पुस्तक का विमोचन करेंगे, परंतु कोविड की वजह से हम लोग वहाँ नहीं पहुँच पाए। इसी जर्नी में मुझे यूक्रेन से एक यूक्रेनियन पोएट मिले जो हिंदी में लिखते हैं, तो ऐसा प्यारा कनेक्शन बना कि जब यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हमारे, चूँकि वसुधैव कुटुंबकम एक परिवार का ही, इस बुक के परिवार का ही एक सदस्य है जो परेशान है, कुछ परेशानी में है, तो हम उनसे बराबर कनेक्टेड रहे, और आज शुक्र है कि वो सेफ़ हैं। इसी प्रकार से एक इटालियन मिले जो डेनियल करके हैं, उन्होंने भी हिंदी पे बहुत सुंदर कविताएं भेजी हैं। इस जर्नी में बहुत ही अच्छे अच्छे लोगों से मेरी भेंट हुई, और आज मैं बड़े प्राउड से कहती हूँ, मैं बहुत गौरवान्वित हूँ कि विश्व के 45 देशों में, 5 कॉन्टिनेंट्स में बहुत ही प्यारा एक कनेक्ट मिला है, बहुत सहेलियाँ, बहुत सारे लोग मिले हैं, और विश्व बंधुत्व का एक वसुधैव कुटुंबकम का बहुत सुंदर संदेश हमने इस पुस्तक से पाया। क्योंकि इस पुस्तक द्वारा हम पुरातन से नव भारत का विश्व बंधुत्व और सर्वे भवन्तु सुखिनः, शांति एवं अहिंसा का ही संदेश दे रहे हैं, और यही इसी संदेश की हमें ज़रूरत है इस वक्त। और बिफोर वी थ्रो द माइक ओपन फॉर द ऑडियंस, वन लास्ट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, योर थॉट्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ वन फैमिली, वन प्लैनेट, वन फ्यूचर। हारून हबीब जी। In fact, some would definitely call it an utopian idea, but I personally feel if we see the life holistically in a wider way, world is one family, Yes. definitely one family. But because of our loss, greed, and loss of grievances, we are just falling apart. The nature just want us to be united, but human beings, for their own wrong perceptions, they are falling apart. I definitely feel today, it's the high time that people must understand the essence of unitedness, that who is big and who is small and weaker. This concept, unless we change, I think world is chaotic today, and the next coming world will be more chaotic. So this Gandhian philosophy of that collective togetherness, is the essence of joint living. Thank you. I think together we can and we will. And राकेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? मैं हारून जी की बात से सहमत हूँ। आई एग्री विथ हिम कि एक होलिस्टिक अप्रोच जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और आज जो वर्ल्ड जिस चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है उसके लिए इस तरह के कंसेप्ट की ही बहुत आवश्यकता है, ज़रूरत है। और इसके साथ साथ ये भारतीयता का इसमें पुट है, ये हमारे कल्चर में है, वसुधैव कुटुंबकम का, और ये हमारी प्राचीन संस्कृति है। और
ये वर्ल्ड, ये दुनिया इस समय जिस अशांति से गुजर रही है, बहुत सारे विकास हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन शांति खोता जा रहा है, शांति की कमी होती जा रही है। तो यदि हम एक दूसरे के बारे में नहीं सोचेंगे और पूरे विश्व को एक जैसा मानकर नहीं चलेंगे या दूसरे के हित को अपना हित नहीं मानकर चलेंगे, तो संभवतः वह शांति हमें नहीं मिल पाएगी। इसलिए यह अप्रोच हमारी समझ से बिल्कुल सही है और ये आने वाले भविष्य में इसकी आवश्यकता इसी की होगी। धन्यवाद। मतलब कि हमें इसी राह पे चलना है। ऋतु जी, आप क्या बोलना चाहेंगे इस पर? विश्व एक कुटुंब के समान है और उसके लिए हमें, मेरी जो निजी राय है कि जो ये युद्ध की विभीषिका पूरे विश्व में बहुत ही फैली हुई है, उसको हमको समहाउ उसको कंट्रोल करना चाहिए। जो विश्व में इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, जो कि मेरा विश्व में कई जगह भ्रमण हुआ, बच्चे तो सब एक जैसे ही हैं, चाहे वो अफ्रीकन कंट्रीज़ में हो, चाहे वो अमेरिका में हो। तो क्यों ना हम सबको एक प्यारा सा विश्व दें जहाँ फूल खिल रहे हों, तितलियाँ मंडरा रही हों और युद्ध की विभीषिका ना हो। तो हमारे गांधी जी का जो एक बहुत ही प्यारा संदेश है, आइए मैं सुनाती हूँ कि चरखे पर तिरंगे स्वप्न बुने, सत्य अहिंसा का परचम फहराया, श्वेत बिंदु मोतियों से गुने और स्वराज स्वप्न सच कर दिखाया। हर हाथ को काम मिले, कुटीर उद्योग का महत्व समझाया, खादी गांधी जुगलबंदी ने आत्मनिर्भर भारत का स्वप्न जगाया। खादी की झीनी झीनी चादर ने एकता का पाठ पढ़ाया और गांधी की विचारधारा ने सद्भावना का परचम फहराया। जीव जंतु पर दया दिखाओ, अहिंसा का सुंदर पंथ सजाया और गांधी ने सत्याग्रह कर विश्व को गांधीवाद सिखाया, विश्व को गांधीवाद सिखाया। और महात्मा गांधी का ये संदेश सत्य और अहिंसा का ही विश्व बंधुत्व की ओर, सर्वे भवन्तु सुखिनः की ओर विश्व को ले जाएगा। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नाउ आई आस्क माय एस्टीम्ड ऑडियंस, आपके कुछ सवाल हों तो प्लीज़ डू आस्क। You can raise your hands. Yeah, thank you everyone for the lovely session you had. I would like to ask the question to the two gentlemen here. So as you mentioned, the Bangladesh has surpassed India in per capita GDP recently and has been doing well in manufacturing and other small scale financing. Even in urban women employment numbers, they are doing really well. Some disheartening news do come up upon treatment of religious minorities once in a while. So I just wanted to ask both of you, like what lessons can both of the nations can learn from each other's successes and mistakes or failures, if any? मैं आपकी पूरी बात में नहीं समझा, एक बार फिर से आप शुरुआत में। I just think Bangladesh is doing well economically in other sections. Some disheartening news might come once in a while about treatment of religious minorities. So I just wanted to ask, what are the lessons the both nations can learn from each other, like for their successes, or are there any mistakes or failures mutually? Okay. It's well known that Bangladesh is working very well on trade and economy part, and this because sometime I think this should be a better answer would be given by Mr. Haroon. He's the expert of this subject actually. Could you explain that? Actually, what happened, Bangladesh was born in 1971. Only 3.5 years later, the man who founded Bangladesh, who was killed brutally along with his family members. And so, from that particular time, Bangladesh was again reverted to the Pakistani days, philosophical. So, in our country, this problem still persists. And as I was talking about the earlier, that why the younger generation took up arms, this is the very finest army of Pakistan. Therefore, this religious
religious is definitely is no, yeah, but there are communal element right from the partition of British India in 1947. They are still there. There are two dominant factors dominating Bangladesh society even today. One is the 1947 spirit, the communal spirit of 1947, which created Pakistan and East and West Pakistan, and another one, the spirit of 1971, which had negated Muhammad Ali Jinnah's two nations theory and created Bangladesh. But unfortunately, even today, in the Bangladesh polity, those forces are still there. Therefore, when you said about some problems of communal disturbances there, they are being created by those forces. But we have a strong civil society. We have a strong pro-liberation, what we call in Bangladesh polity, forces who, as and when such incidences occur, we just rush and we just control and combat. राकेश जी, हमारी ऑडियंस में अभी एक आई है स्लिप और काफ़ी बच्चे हैं जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, तो वो आपसे कुछ गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, किसी का कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है या कोई कुछ पूछना चाह रहा है? एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग? अच्छा, Hello. So first of all, greetings to you all. So I just wanted to clarify, like, how are we supposed to justify this notion that India is going to be a superpower? Like, if we look at just one aspect like manufacturing, so Indian workers in comparison to Vietnam and China are 5 to 6 times less efficient than them. So like, I don't want my people to live in this hallucination that we are going to be a superpower, because so that might, bring us down. Like, I support all the optimism, but we need to be a bit realistic about what is the real situation of our country. yeah, thank you. Nice question. It's well known that like Vietnam, China and everything, that is the old story. But nowadays that if you remember that कि कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री ने बोला था ये युद्ध का समय नहीं है. So only thing is now required is there शांति. And for all these things and कोई भी आपका trade, investment, development, SDI जितनी भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें इससे मैटर करती हैं कि आपके पॉलिसी एंड आपका नेबरिंगहुड एंड जियो स्ट्रेटजिक सिचुएशंस. तो आपका जो क्वेश्चन था, मुझे लगता है कि हमें इस तरीके से कार्य करना होगा कि जिससे वसुधैव कुटुंबकम की हमारी भावना बनी रहे. Okay, this is one last question. Good evening, everyone. I am Dipanshu. My question is regarding Vasudhaiva Kutumbakam. When we talk about Vasudhaiva Kutumbakam, there will be people who are unlike us in terms of food preferences, or maybe clothing, fashion, or have ideological differences from us. Don't you think accepting those people will be a contradicting ideas to the right-wing political parties and nationalism's basic thoughts which they have laid in India right now? Oh, thank you. Actually, you are asking something controversial question. If we go through nationalism and Vasudhaiva Kutumbakam, हो सकता है आपके हिसाब से दोनों opposite हो, but there is something political or something disputed. So I would not like to reply on that. But हमारा जो भविष्य है, future है, यही है कि हम वसुधैव कुटुम्बकम की भावना पर ही कार्य करें. बहुत सारी धारणाएं हो सकती है, बहुत सारी थिंकिंग हो सकती हैं, हम सब चीज़ों पे हम नहीं जा सकते हैं. धन्यवाद. बेटा, जैसे ये हमारा हाथ है, इसकी 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, बट एक भी उंगली अगर वो हो तो हाथ नहीं रहता है. तो दैट इज़ व्हाट मेक्स अ हैंड, एंड हर कोई एक सा नहीं रहता है. सो 5 उंगलियां मिल के ही एक हाथ बनता है. वैसे ही हमारा देश बनेगा
आप विश्वास रखिए अपने ऊपर और अपने देश के ऊपर और अपनी देशभक्ति के ऊपर. We will definitely one day become a superpower if we stick together. Yeah, thank you. That was a very good thought, ma'am. With this, I'd like to thank all of you for being here. Now, may I please invite on to the dais Raghav Chandra ji, the director of Bhopal Literature Festival, to please come forward and present a memento to our speakers as a token of our love, respect and gratitude. And Mr. D.K. Mehta, the secretary of the Bhopal Literature Festival Society. This memento is the mascot of Bhopal Literature Festival 2023. It is a picture of a highly endangered bird called lesser flourishan, captured by Padma Shri Balu Mondeji. This is not the end of the day, because to conclude with, we have a special cultural dance performance for you by the students of NID. So please do not leave. Now it's time for a cultural performance by the students of NID. So he wants to address the audience. So over to you, Johan. Good evening, everyone. I hope you've had a good time at BLF. I am Johan D'Souza from the National Institute of Design, Madhya Pradesh, and I'm here to introduce the team NID that has worked on the visual identity of BLF. The students of NID MP have really enjoyed working with BLF, and as a special gift to the team, to BLF, we have a few cultural performances from our end. So firstly, we have Sonakshi Singh, who practices whacking, a dance form from the 70s. So please welcome Sonakshi Singh to the stage as she performs on Fir Se Ud Chala. Let's welcome her with a huge round of applause. छोड़ा है जहान नीचे मैं तुम्हारे अब हूँ हवाले अब दूर दूर लोग बाग मीलों दूर ये वादियाँ घर धुआं धुआं तन हर बदली चली आती है छूने पर कोई बदली कभी कहीं कर दे तन गीला ये भी ना हो किसी
किसी मंजर पर मैं रुका नहीं, कभी खुद से भी मैं मिला नहीं, ये गिला तो है मैं खफा नहीं। शहर एक से गांव एक से लोग एक से नाम एक फिर से उड़ चला सपने ये कितना भी पलकों से झाड़ो फिर आ जाते हैं। इतने सारे सपने क्या कहूँ किस तरह से मैंने तोड़े हैं छोड़े हैं क्यों मेरे साथ चले मुझे लेके उड़े क्यों। कभी बात बात मेरे साथ साथ फिर दर्द ये कभी सहरा कभी सावन बनू रावण क्यों मर मर के कभी डाल डाल कभी बात बात कभी दिन है रात कभी दिन दिन है क्या सच है क्या माया है दाता इधर उधर तितर बितर क्या है पता हवा ले ही जाए तेरी ओर खींचे तेरी यादें तेरी That was a beautiful performance. So now I welcome you all to see another performance by Medha Kulkarni, another one of the gems of NID MP, as she sings two Carnatic songs, Ratnagarbha Ganapatim, an invocation song, and Brochevare Varura. रत्नगर्भगणपतिं समाश्रयामि सन्ततं प्रत्नवचन गीयमान निजचरित्रवैभवं भिन्नदन्तमखिलदेव सन्नुतं दयान्वितं पन्नगोपवीतमापन्नपालनादरं कुवलयेशेखरं प्रणवमयस्वरूपिणं शिवसुतं निभवदनम् अखिलभुवनमङ्गलप्रदम् कश्यपादि मौनि हृदय कमलकुहर मधुकरं हृष्ट
शृङ्गपुरायतीन्द्रवशमिष्ठदायकं ब्रोचेवारे वरुरा निन्नु विना रघुवरा नन्नु ब्रोचेवारे वरुरा निन्नु विना रघुवरा नन्नु ब्रोचेवारे वरुरा निन्नु विना रघुवर नन्नु ब्रोचेवारे वरुरा निन्नु विना रघुवरा नी चरणाम्बुजमुनुने विडजाल करुणाला वाल ब्रोचेवारे वरुरा सीतापते नापै नीकभिमानमुलेदा सीतापते नापै नीकभिमानमुलेदा वातात्मजार्चितपादा नामोरलनु विनरादा आतुरमुग करिराजुनि ब्रोचिन वासुदेवुडे नीवु गदा आतुरमुग करिराजुनि ब्रोचिन वासुदेवुडे नीवु गदा आतुरमुग करिराजुनि ब्रोचिन वासुदेवुडे नीवु गदा ना पातकमेल्ल पोगोटि गटिगना चैपटि विडवकसा सानिद पदनि सनि निदद पम पादमा ग म पदनि सनि द पम निद पम ग म पद म गरि सम ग म पद म पदनि स सरिनि निनि सदा ददनि पद म पदनि सानि द प म ग म नि दनि पद म पदनि स म गरि सरि सानि द प स नि द प म ग म पदनि स सानि द पदनि स नि नि द द प म पद म ग म पदनि स नि द प म नि द प म ग म पद म गरि स म ग म पद म पदनि स सरि नि 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 स द द द नि पद म पदनि स नि द प म ग म नि द नि पद म पदनि स म गरि सरि स नि द प स नि द प म ग म पदनि ब्रोचे रे वरुरा Now we have Gagan Holkar and Akanksha Kochrekar, who will be performing a beautiful semi-classical performance on Breathless. Their concept revolves around the inner conflict that lies within oneself, what one must do and what one mustn't do. So please welcome them and give them a big round of applause.
हुए प्यार की यादें मन और खोए हुए प्यार की यादें। अब जो मेरे दिन और अब जो मेरी रातें हैं उनमें सिर्फ आंसू हैं, उनमें सिर्फ दर्द की रंज की बातें हैं और फरियादें हैं। मेरा अब कोई नहीं मैं हूँ और खोए हुए प्यार की यादें हैं। डूब गया है दिल गम के अंधेरे में, मेरी सारी दुनिया है दर्द के घेरे में। मेरे सारे गीत ढले आहों में, बन के दीवाना अब यहाँ वहाँ फिरता हूँ, ठोकर खाता हूँ उन राहों में। जहाँ उसे देखा था, जहाँ उसे चाहा था, जहाँ मैं हंसा था और बाद में रोया था, जहाँ उसे पाया था पाके खोया था, जहाँ कभी फूलों के कलियों के साए थे, रंगी रंगी महके रुत ने हर एक कदम पर रास रचाए थे। गुलशन गुलशन दिन में उजाले थे, जगमग जगमग नूर तरह तुम झिलमिल झिलमिल चमका सितारा जैसे कोई गगन में, गूंजी सदा कोई मन आंगन में। किसी ने पुकारा मुझे मुड़ के, जो देखा मैंने मिल गया खोया हुआ दिल का सहारा मुझे, जिसे मैंने चाहा था, जिसे मैंने पूछा था, लौट के आया है। थोड़ा शर्मिंदा है, थोड़ा घबराया है, जुल्फ परेशान है, कांपते होंठ और भीगी हुई आंखें, देख रहा है मुझे गुमसुम उसकी नजर जैसे पूछ रही है, इतना पता तो कहीं खफा तो नहीं तुम प्यार जो दिखा फिर मेरी निगाहों में। अब नहीं था वो मेरी इन बाहों में, भूल गया मेरा दिल जैसे हर गम बदल गया, जैसे दुनिया का मौसम झूम नजारे और झूमी फिजाएं और झूमे चमन और झूमी हवाएं, जैसे फिर बहने लगी सारी दिशाएं। कितनी हसीन है कितनी जुबानी, हम दोनों की प्रेम कहानी, हम दोनों की प्रेम कहानी, हम दोनों की प्रेम कहानी। For the final performance for tonight, we bring to you Forum Prajapati, a professional Bharatnatyam dancer, and Janvi Patel, a professional Kathak dancer, as they perform a fusion of the two beautiful dance forms. So please give them a big round of applause for the final performance. मेरे ढोल ना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोल ना सुन। सानी धा नी धा मा मग सनी धनी सगमा। Sani dani sagama sani dani sagama sani da magama dani sani da magama dani sani dani sar dani sar dani sar dani sar madani 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 dani sar dani sar dani sar madani 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 sa madani sa madani sa madani sa sani dama sani dama sani dama sani dama mama gaga sa sani ni da da ni sa sani ni da da mama gaga sa sani ni da da ni sa ni da sa 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 मेरे ढोल ना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोल Such a graceful performance by all of you. This brings us to the end of day 2. This was an absolutely scintillating, absolutely memorable performance by
the students of National Institute of Design, Bhopal. It is particularly close to our heart because the students of NID have devoted the past 2 or 3 weeks to finalizing the various designs and giving their ideas for the Bhopal Literature Festival. And we have used their services. They are our design partners as an institute, but I did not know that their talent runs beyond traditional design to the performing arts as well. And when yesterday they made a passing mention that they have a lot of talent in-house, I had absolutely no idea that they were really so talented. Tremendous, outstanding performance, and now I know why it is said that design, art is at the basis, at the root of all creativity, development, science, invention, the world, consciousness, everything. You have to have an idea, and certainly you people have great ideas. Well done. So we have with us Brigadier Sanjay Agarwal, who's our colleague from the Society for Culture and Environment, and he has a surprise gift for you, and he'll tell you what that surprise gift is himself. Sanjay, I'd like you to come here and offer them this, present them this surprise gift. No, that of course. Yeah, so just tell them what it is. Okay, NID guys, you rock. And exactly what... Achha, okay, Mike. So exactly what Raghav sir said. Yesterday even I had no idea. And look at the दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का हाथ. I am holding in my hand my favorite dessert, trifle pudding, and a whole huge lot given to me today, and the ladies here know it. There she is, one Anuja Srivastav, and Amna is not here. I said, my classmate has got this made. My classmate from 30 years ago, 40 years ago. You loved trifle pudding, I've got it made for you. I think more than me, you all guys deserve it. So please, I'll be happy to it. Please come. All of you. Absolutely. That's such a beautiful gesture, sir. Thank you everyone for being here today. That was all about the day 2 of Bhopal Literature and Art Festival 2023. We'll be resuming tomorrow with the session from 10 a.m. onwards. Hope to see you all tomorrow as well. The sessions for tomorrow are as follows. We'll begin with the Bhopal Heritage Walk, so you guys can join us.
Then we will be having winning strategies for coming to par. Next session is essence of the Ramayana, Mahabharata, Upanishads and Purana. Backstage glimpses of high strategy and power. Cheetahs, the last and the latest. China, the threat of war. Dastane Jagjit. The great tech game. Society 5.0. Tribals and the war of independence. Valedictory function. Thank you so much. Have a great night. Bye. Take care.